this time I was in my 5th month of the pregnancy और 5वां महीना होते ही you have anomaly scan जो होता है। तो मेरा anomaly scan भी हो चुका था। The baby was fine, the water level was fine, pregnancy was healthy, everything was perfect, and literally everything was perfect, no problem at all. And उसके बाद on June 21st I even went to office से जाके आने के बाद what happened was I started having cramps. I told everybody around me कि मुझे cramps आ रहे हैं. My parents and in-laws, everybody said कि ठीक है हम डॉक्टर के पास जाते हैं कल. तो आफ्टर डिनर मेरे जो क्रैम्प्स है वो फ्रीक्वेंटली मेरे को पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में आने लगे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया. मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर, आई एक्सप्लेन हिम कि मुझे क्या हो रहा है एग्जैक्टली. डॉक्टर ने बोला कि आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए जल्दी. सो वी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ने चेक किया मेरे को. डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो ही सेड इट्स ऑल वाटर इनसाइड. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से. आई वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड बिकॉज आई वाज आल्सो रीडिंग अबाउट इट. तो आई वाज लाइक हाउ कैन देयर बी वाटर, देयर इज नो वाटर ब्रेक. यूजुअली वाटर ब्रेक जब होता है तो देयर इज लॉट ऑफ वाटर दैट गश आउट, बट नथिंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपेंड विद मी. फिर द डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में लो हेड रेस्ट पे डाला, where you are like sleeping in the slant position where your head is up. So he said कि कल सुबह हम सोनोग्राफी करेंगे to check कि कितना amount of water is left in the sac, क्योंकि that was something that's going to decide the fate of my baby. So I was really worried. So the entire night I couldn't sleep. I was just waiting for the next day to come in sonography. Doctor ने बोला there's no water left in my sac at all, but the baby was moving, and because by this time there was no water left at all, I could feel the baby more nicely, more clearly actually. So the doctor said that you can try for a week कि the baby tries to form the water all by himself, or we'll also have to check if there is any infection caused because of the fluid, and like usually possibilities of sac rupture के रीज़न ज़्यादा पता नहीं होते, बट आर डॉक्टर सेड कि बिकॉज वाइल प्लेइंग माई बेबी हैड अ लॉट ऑफ मूवमेंट वाइल प्लेइंग. उसने शायद अपने नाखून से द सैक को ही रप्चर कर दिया है. देयर इज अ माइन्यूट होल इन द सैक जिसके वजह से देयर वाज अ वाटर लीक, एंड इट वाजंट दैट ऑब्वियस फॉर अस टू नो. सब लोग ढूंढने लगे वाटर इन्फ्यूजन हो सकता है क्या. द फैमिली स्टार्टेड टॉकिंग टू 2-3 more doctors to understand the entire situation. Till that time मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, एंड ब्लड टेस्ट में आया कि I have an infection. So we were in a situation where we can't do water infusion because ज़्यादा होता नहीं है नंबर 1 इंडिया में, which is very unnatural process. Number 2, वाटर इन्फ्यूजन तभी काम करेगी जब there is no other hole in the sac. You will keep putting water from here and there will be a leak that will happening from the other side.
So what's the point? There's no point. The other part was we can still keep the baby in the womb and try and as much as we can to save the baby. But by this time मेरे को इन्फेक्शन हो गया था विद इन, जिसके वजह से you can't keep the baby with him, क्योंकि if you try to then the infection will spread to my uterus. Family was very much sure that they want to save me. Doctor said if we save the baby it will be harmful for me. Think about me, then she can still have babies in future. So the entire family took a decision and they wanted me to take decision, but it was impossible for me because for that period of time मैं सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी और ये लोग सब लोग अपने बच्चे के बारे में सोच रहे थे, which was me. I was very much confused, couldn't think anything, but I believe that my baby took decision all by himself. And June 22nd 11 o'clock at night कि मेरे को क्रैम्स शुरू हो गए थे, क्योंकि बेसिकली वट एवर आई वॉज रेफरिंग इन दिस वीडियो एज क्रैम्स, वो क्रैम्स नहीं थे, वो मेरे लेबर पेन्स थे. मेरे को लेबर पेन शुरू हो गया था राइट फ्रॉम June 21st at night. 22nd 11 o'clock को मुझे फिर से लेबर पेन शुरू हो गया. 23rd 4 o'clock I could sense my baby coming down. I think because by that time there was no water present and my uterus started getting dilated, and I also believe my baby, just to save me, he took this call and he came out all by himself. I normally delivered a baby boy and he was this small. I literally felt him moving all this while, but my angel couldn't live in this world is because usually babies can't breathe outside the womb once they cross 28 weeks, which is अगर तुम्हारा बच्चा 7 महीने में डिलीवर होता है then he can breathe all by himself outside the womb, जिसके वजह से incubator will help them to grow and breathe. But in my case I haven't crossed 28 weeks का gestation, due to which my baby can't breathe even if given the incubator. So that's how he stopped breathing. And when this news was made public, I mean shared with friends and family, I was very surprised to know कि कितने लोगों के साथ हुआ है. I don't understand why people don't talk about pregnancy loss. आप वेट करते हो कि किसी लड़की का प्रेगनेंसी लॉस हो जाए, फिर आप जाके उसको बताओगे कि हाँ मेरा भी हुआ था, यू डोंट वरी अबाउट इट. नहीं यार, मतलब पहले ही बताओ सो दैट वी विल बी प्रिपेयर्ड. तुम सिर्फ हाँ बच्ची खुशी है, बच्ची खुशियाँ है, बच्चे वैसे हैं, सब पूरा फोकस फॉर दैट मोमेंट इतना बच्चा हो जाता है कि किसी ने सोचा. मुझे नहीं पता था सच में मिसकैरेज. सिर्फ इतना बोलते हैं कि 3 महीना बहुत संभाल लिया करो, क्योंकि 3 महीना में मिसकैरेज होने के चांसेस है. नहीं, ये झूठ है. तुमको मिसकैरेज कभी भी हो सकता है, भले ही वो तुम 3 महीने में हो, 4 महीने में हो, 5 महीने में हो, 6 में हो, 7 में हो. बहुत लोगों का तो 9 मंथ्स के बाद भी दे गिव बर्थ टू अ स्टिल बेबी.
आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम लोग इस बारे में बात कैसे नहीं करते। मुझे सच में इस बारे में नहीं पता था, तो इट वॉज अ शॉक फॉर मी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सबको इसके बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि जितना फीमेल्स इस चीज़ को लेके प्रिपेयर्ड रहेगी उतना उनको मेंटली बहुत हेल्प होगा। ऑनेस्टली मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अ, सब लोग मैरिड कपल्स को ना इतना बोलते हैं कि बच्चा कब कर रहे हो, खुशखबरी कब दे रहे हो, ये कब कर रहे हो, वो कब कर रहे हो। तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप जब ये बकवास की बातें करते हो ना, तब शायद आप ये फैक्ट भी डालो उनके दिमाग में, टू बी रेडी फॉर गुड थिंग एंड बैड थिंग इज वेल। ऑनेस्टली फिर तो कभी बोलोगे कि कौन इसके बारे में सोचता है कि ऐसा होएगा करके। सबके पास LIC लेते हो ना तुम लोग, ये सोच के नहीं लेते हो ना कि हाँ मरोगे किस दिन, पर लेते हो राइट। तो वाई डोंट यू प्रिपेयर, might as well prepare the couples for the good as well as the bad thing, and talk about it, talk about pregnancy loss, talk about, make this thing really common honestly, all the married couples honestly, कि please if you're going through the same thing, please be there for each other, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है ना जहाँ पे सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ ही एक दूसरे को कंफर्ट दे पाएंगे। हस्बैंड्स, बिकॉज हस्बैंड ने कभी बच्चे को फील नहीं किया है, उसने जो फील किया है अपने वाइफ के थ्रू किया है, और एक माँ ने अपने बच्चे को लिजिट बहुत बाय दैट टाइम शी हैज़ लिव्ड विथ हर, तो मेक श्योर कि तुम लोग दोनों एक दूसरे को समझो और एक दूसरे का साथ दो, क्योंकि कोई और तीसरा बंदा तुमको हेल्प नहीं करने वाला है टू कम आउट ऑफ दिस। ऑनेस्टली I and Abhishek never planned for this baby. He came as a surprise and he left as a surprise. 3 memories that I would like to share with you guys. Happy memory. So it was my first ever ultrasound at my 3rd month, where we were actually बेबी को देखने वाले थे स्क्रीन पे, एंड मैं और अभिषेक खड़े थे वहाँ पे. दिस वॉज अ विजुअल दैट वी सॉ. He took both his hands under his head and his leg one above another. So it was like very different visual that he showed us, where Abhishek was like, "ए रजनीकांत जैसे सोया है एकदम मस्त में, like Raja and all." So that was one of the experience. The other experience was, so I believe my baby was way too fast, because it is said कि 6 months, स्पेशली अगर आपका पहला प्रेगनेंसी है तो 6 months के एंड तक आपको बेबी के मूवमेंट्स पता चलते हैं. पर in my case, my baby kicked me in my 4th month itself. So he kicked me thrice. So at first he kicked me and I ignored actually, because सब बोलते तुम इतना पढ़ती रहती हो, तो फिर you start assuming things, so stop reading so much. After some time again he kicked me at the same place. Then I was like, this isn't a kick, it actually feels like someone is kicking from within. And so I called Abhishek and asked Abhishek to touch, and at that time he kicked, और अभिषेक को लगा अपने हाथ में, and he screamed with so much joy. He was like, oh mama, come here, just see the baby kicked, oh my god. And after that he ate in. So that was one of the best feeling, which he only gave it to me and Abhishek and nobody else. Like our parents kept on touching my stomach to know, to know the movements or anything, but never
he made his presence feel other than me and Abhishek. And the third was my anomaly scan. Doctor wanted him to be in a certain position, but he wasn't giving that position. He was upside down, rotating, hiding his hands. And then doctor smiled and said, "You really have a very notorious baby." So then I looked at him, and he turned his screen towards me, and then I saw him on the screen that he was fully formed, and I saw his tongue licking his thumb, and he was sucking the thumb. He was way too fast for what he was. That was my most miraculous uh, you know thing that I ever saw, which was within my body. Then I saw him was directly when I delivered him. These are the three main memories that I'm going to live with. That's it with today's video. Um, I pray that this video can reach people in need. Uh, as we learn and progress, I and Abhishek will try to share more things on this journey. And I don't know, we couldn't get this help. I hope if we figure out things, we will definitely share, because life is just not about good things, it's also about bad things, tough times. Till then, take care. Bye. Good.